Click here to subscribe our channel. Do not forget to press the bell icon to get regular updates of free videos. ठीक है, चैप्टर नंबर 5 mainly first of all chapter number 5. So far we have done chapter number 1, 2, 3 and 4, state of economy, fiscal development, external sector and monetary management. Fifth chapter is all about price and inflation. Price and inflation. Information about price and inflation. So first thing, if you have to define inflation, inflation is mainly persistent increase in the general price index. So if there is a persistent increase in general price index, then that term is defined as inflation. The rate at which price will rise, that will be the rate of inflation. So inflation generally means rise in the price level. जिस rate से वो increase हो रहा है, that rate will be known as rate of inflation. So if you are calculating inflation rate for any particular period, suppose I calculate inflation rate of T period, तो मुझे प्राइस T पीरियड का लेना है, करंट पीरियड का, माइनस प्राइस ऑफ लास्ट ईयर और एज अ परसेंटेज ऑफ द बेस, मतलब लास्ट ईयर से डिवाइड कर लेंगे. तो अगर इन्फ्लेशन का रेट किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए कैलकुलेट करें, देन इट विल बी बेसिकली change in price as a percentage of last year price, that will be the rate of inflation. Now this is not price of only one commodity, this is basically price index. So when I say price index, that means we are referring to a consumption basket. एक कंजम्पशन बास्केट का कॉस्ट हमने कैलकुलेट किया, अगर पॉइंट टू पॉइंट इन्फ्लेशन ले रहे हैं तो एक कंजम्पशन बास्केट का कॉस्ट हमने कैलकुलेट किया ऑन 1st of April 2019. सेम बास्केट कॉस्ट ऑन 1st of April 2020, तो पॉइंट टू पॉइंट इन्फ्लेशन हो जाएगा. तो अगर एक पर्टिकुलर बास्केट को बाई करने में लेटर से यू रिक्वायर 100 एंड इन ऑर्डर टू बाई द सेम बास्केट आफ्टर अ ईयर इट रिक्वायर 105, then inflation rate is 5%. This is change in price of 5 divided by base 100 into 100, that will be 5% rate of inflation. So we basically, when we calculate inflation rate, it is a rate at which price is changing, but these are price of a consumption basket. अब अगर ये consumption basket हमने रूरल एरिया का ले रखा है तो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल इकॉनमी के लिए हो जाएगा. अगर ये बास्केट हमारा अर्बन इकॉनमी का है तो CPI अर्बन इकॉनमी के लिए हो गया. तो CPI रूरल का भी अलग निकलता है, CPI अर्बन के लिए अलग निकलेगा. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल वर्कर अलग आ जाता है, तो एग्रीकल्चर वर्कर का कंजम्पशन बास्केट डिफरेंट हो गया. तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बास्केट, एंड व्हेन आई से प्राइस, देन वी कैन कंसीडर दिस प्राइस एज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. इट मीन्स द प्राइस एट विच कंज्यूमर इज बाइंग इट, एंड देयर कुड बी अ होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑल्सो, the price at which wholesalers are selling the product. So there will be a gap between wholesale price and retail price. So first of all, inflation refers to rise in the price index. The rate at which price index will change, that will be the rate of inflation, and we are referring to different basket of good. Accordingly, we are having different rate of inflation. One rate of inflation is wholesale price index, another inflation rate is कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. इसमें भी एक कंबाइंड है, मतलब रूरल अर्बन के लिए भी कंबाइंड है और सेपरेट भी है. देयर विल बी अ हेडलाइन इन्फ्लेशन एंड देयर विल बी अ कोर इन्फ्लेशन. ठीक है, तो कोर इन्फ्लेशन निकालते समय क्या किया हमने, हेडलाइन इन्फ्लेशन से फूड इन्फ्लेशन और फ्यूल इन्फ्लेशन को हमने माइनस किया है. वो इन्फॉर्मेशन स्टेट ऑफ इकॉनमी के अंदर भी लिखा था फर्स्ट क्लास के अंदर. सो देयर आर सर्टेन इन्फॉर्मेशंस given related to the inflation and price. One information at a global level, second information at national level,
and third information as state level. So globally inflation is declining, nationally also inflation rate has declined, although in the recent quarter or month we can say there is an upturn, and in many states also inflation rate has reduced. So global information, then national information, and then state level information. And there are various types of inflation index. So WPI, CPI core or CPI headline or CPI combined, these are various measures of inflation rate. Second basic aspect, you must know that if we are referring to change in the price, then prices are determined by the market forces of demand and supply. So if there will be more demand relative to supply, then you call it demand pull inflation. And if there is increase in cost, and because of higher cost there is increase in price, then it is referred as cost push inflation. So there can be demand pull inflation or there can be cost push inflation. Demand pull and cost push inflation. Demand pull inflation and cost push inflation. Usually demand pull inflation is caused by increase in demand, and when I say in macro demand, it refers to aggregate demand. And aggregate demand include consumption spending, investment spending, government spending also. So demand pull inflation could be because of fiscal expansion also, or it could be because of monetary expansion also. Demand pull inflation could be because of fiscal expansion or it could be because of monetary expansion as well. Monetary expansion like money supply increases, rate of interest will fall. At a lower rate of interest there will be more investment demand. So even when there is more investment demand, there will be more prices. So demand pull inflation is generally caused by fiscal and monetary changes. Or you can say if there is a fiscal के अंदर आप further aspect भी ले सकते हैं. Let us say government reduces the tax rate. So when government will reduce the tax rate, then when government will reduce the tax rate, in that condition disposable income will increase. With higher disposable income, consumer will spend more, and that will also increase demand for goods. So those measures are also demand side inflation. So the inflation can be demand pull or inflation can be cost push. Some example of cost push inflation: increase in price of fuel. So if fuel prices rises, then it will increase transportation cost, thereby it will increase overall cost, and therefore it will push price upward. तो कुछ एग्जाम्पल आपको डिमांड पुल और कॉस्ट पुश के याद रखने हैं. बट ब्रॉडली इन्फ्लेशन इज बीइंग कॉज आइदर बाय द डिमांड साइड और बाय द सप्लाई साइड. सप्लाई साइड एक्चुअल में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. And inflation and unemployment. Inflation and unemployment are inversely related as per Phillips curve. So as per Phillips curve, there is an inverse relationship between unemployment rate and inflation rate. Unemployment rate and inflation rate are inversely related. So if you mark unemployment rate and inflation rate and unemployment rate, then Phillips curve will be negatively sloped. Phillips curve will be negatively sloped. अदर बेसिक इन्फॉर्मेशन जो सर्वे के अंदर एक्चुअल में जो इंडिकेटर है उसे डायरेक्टली यूज कर रहा है विदाउट एक्सप्लेनिंग दोज टर्म्स. रिमेंबर, इन्फ्लेशन कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड फ्रॉम वन वे ऑफ कैलकुलेटिंग इन्फ्लेशन इज फ्रॉम द प्राइस इंडेक्स. बास्केट अपने गुड्स का लिया है, उस बास्केट का कॉस्ट कैलकुलेट किया, तो उस बास्केट का कॉस्ट कैलकुलेट करने का मतलब हमने पर्टिकुलर प्राइस इंटू क्वांटिटी किया होगा. इस बास्केट में बहुत सारे कमोडिटीज होंगे. प्राइस इंटू क्वांटिटी प्लस प्राइस इंटू क्वांटिटी प्लस प्राइस इंटू क्वांटिटी, दैट विल बी वन नंबर. और नेक्स्ट ईयर का लिया है फिर, ठीक है. तो बास्केट हमने सेम रखा, मतलब क्वांटिटी को क्या लिया है, सेम लिया, बट ये प्राइस सेकेंड ईयर के लिए जब कैलकुलेट करेंगे तो प्राइस डिफरेंट लेंगे, बट बास्केट आई विल टेक same. So if the earlier the overall number was 100 and now the number is 105, then we can say inflation rate is of 5%. Now inflation can also be calculated from GDP deflator. Deflator का change भी inflation rate को measure करता है. And what was deflator? In first class we explained.
डिफ्लेटर वाज नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी, परसेंटेज में करते हैं तो 100 से आ जाएगा. सो इफ यू कैलकुलेट जीडीपी डिफ्लेटर देन इट इज nominal GDP, and nominal GDP is price of current year into quantity of current year. And when we calculate real GDP, then it is price of base year into quantity of current year. Therefore, when we calculate GDP deflator, then GDP deflator is a nominal GDP by real GDP. Nominal GDP over real GDP into 100 करते हैं to find the value of deflator. So nominal upon real. So this quantity of current year will cancel out. So this will be only price of current year upon price of base year. ठीक है. So GDP deflator is in fact nothing but price ratio. current year और base year का price ratio होता है deflator. So what is the utility of deflator? Utility of deflator is basically that one is you can calculate inflation rate, and second is that you can convert real into nominal or nominal into real by using the number of deflator. So if you multiply deflator with real GDP, if you multiply deflator with real GDP you will get, and if you divide that nominal GDP with the deflator, nominal को हमने deflate किया है to in order to calculate real value. So nominal divided by deflator will give you the real GDP. And in the past deflator value has state of economy, first class से कॉल कीजिए. In the past deflator value has reduced. अब deflator की वैल्यू अगर कम हो रही है तो उसका मतलब है रियल इंटू डिफ्लेटर करेंगे तो नॉमिनल आएगा. तो इकॉनमी में नॉमिनल जीडीपी का ग्रोथ रेट कम होने के पीछे एक और रीजन है कि डिफ्लेटर की वैल्यू क्या है, कम है. हायर विल बी द डिफ्लेटर, हायर विल बी द नॉमिनल नंबर. डिफ्लेटर ज़्यादा होगा तो नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी. These are some basic points related to that inflation. And what is stagflation? It is stagnation plus inflation. Stagflation, stagnation plus inflation. Structural inflation, structural information, structural inflation, structural. तो स्ट्रक्चरल एक्चुअल में इकोनॉमी के स्ट्रक्चर से उसका रिलेशन है. इफ द स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी इज दैट इट कॉजेज हायर prices, like what could be the structural bottlenecks, lack of infrastructure, then also the transportation cost will be higher. Lack of agricultural productivity, then also production in agriculture sector will be less. So or overall lack of competition in the economy. तो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसमें मोनोपोली पावर ज़्यादा है, एंड इन द मोनोपोली मार्केट द प्राइसेस टेंड्स टू बी हायर. सो दैट कुड बी ऑल्सो द रीजन फॉर इन्फ्लेशन. Now write some basic points related to inflation as stated in survey. Major points you can write. First, the global economy has been witnessing a steep decline in inflation over the last 5 decades. ठीक है, इंफॉर्मेशन वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली है 2019 इन ब्रैकेट वी कैन राइट.
So globally inflation has reduced. Second, inflation has declined in almost all the countries. Inflation has declined in almost all the countries around the world. Including emerging market economies. Including emerging market economies. Including emerging market economies. Next, the main reason for steep decline in inflation is adoption of better monetary and fiscal framework. Comma, structural reform of labor and product market. That strengthen competition. And also adopting inflation targeting. ठीक है, इंडियन कंटेक्स्ट में रखेंगे. इन इंडिया inflation targeting was adopted since 2016. ठीक है, India introduced inflation targeting on 5th August 2016. On 5th August 2016 for a period of 5 years. So we are following basically inflation targeting regime. 2016 it was adopted, and it will be continuing, or inflation targeting will be the main policy till 2021. Next, you can write one table for inflation rate, and this is of WPI, wholesale price index, then consumer price index combined, consumer price index of industrial worker, consumer price index for agricultural labor, and CPI for rural labor. Targeting में basically your objective is basically to keep inflation at a moderate level. Moderate means, let us say, 3 to 5. So you are targeting inflation. That means the main aim of monetary policy is to keep inflation. So adjust your money supply in such a way that inflation rate remains in that region.
ठीक है, इसमें भी कंप्लीट टेबल वैसे याद करने की जरूरत नहीं, बट 13 14 से इंफॉर्मेशन गिवन है। 13 14 14 15 15 16 17 18 18 19। ठीक है, WPI 5.2 1.2 -3.7 1.7 3 4.3 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 19 4% और 18 19 के दो इंफॉर्मेशन है इनफैक्ट, एक प्रोविजनल है और एक एस्टिमेट है। आप एक इंफॉर्मेशन लिखो बस 4.3 एंड देन राइट इट फॉर 1.5। then 9.4 5.9 4.9 4.5 3.6 3.4 एंड 4.1। ठीक है, वहाँ दो इंफॉर्मेशन गिवन इनफैक्ट 18 19 के। and CPI for industrial worker was 9.7 6.3 5.6 4.1 3.1 5.4 and 7.6। agriculture labor is 11.6 6.6 4.4 4.2 2.2 2.1 and 7.3। and for rural labor it is 11.5 6.9 4.6 4.2 2.3 2.2 and 7.1। बट ये लास्ट वाले कॉलम पे ध्यान दीजिएगा, ये नाउ इट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, वो वैल्यू एज कंपेयर टू रिसेंट पास्ट, ये नंबर अब इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए या एग्रीकल्चर लेबर के लिए या रूरल लेबर के लिए जो इंडेक्स है, प्राइस इंडेक्स, वो इंक्रीज हो रहा है। So, was there any economic event which led to a -3.7 WPI in 2015-16? Inflation was one reason for the 16 lower world over there was lower inflation, और 16 का डेटा अगर आप टाइम लैग के साथ अगर वो इंफॉर्मेशन अगर आ रहा हो तो 16 was the period of demonetization also. So with less money in the economy, money and price are directly related. So if you withdraw money, naturally inflation will also reduce, inflation कम हो जाएगा, तो inflation का भी impact होगा, inflation के ऊपर भी उसका impact था, because money and price are directly related. So if there are more money, there will be more prices. If there is less money, there will be less prices, because in order to create demand you need money, but if money is withdrawn from the system then there will be less inflation as well. 16 हाँ 16 के है, वही कह रहा हूँ, ये टाइम लैग के ये वर्ल्ड इन्फ्लेशन वर्ल्ड लेवल पे अगर लोअर इन्फ्लेशन होगा, लाइक फॉर एग्जांपल से प्राइसेस ऑफ फ्यूल started declining since 2014-15। ठीक है, it used to be in the range of around say 70 or 80 dollar per barrel and it is less than 50, so that was a major chunk in that determining that inflation. Right on, next. In India inflation has been witnessing
in India, inflation has been witnessing moderation. Inflation has been witnessing moderation since 2014. Inflation has been witnessing moderation since 2014. However, recently, it has shown uptrend. It has shown uptrend. It has shown uptrend. The headline consumer price index combined, the headline CPI combined, headline CPI combined increased to 4.1%. Increased to 4.1%. Increased to 4.1% in 2019-20, 19-20 और 19-20 में ये अप्रैल टू दिसंबर का इंफॉर्मेशन है, इन ब्रैकेट अप्रैल टू दिसंबर, अप्रैल 19 टू दिसंबर 19. On the other end, WPI inflation on the other hand, WPI inflation has seen an increase between 2015-16 and 2018-19 and 18-19. After comma, it fell or reduced from 4.7%. It fell from 4.7% in 2018-19 to 1.5 during April to December 2019-20. April to December 2019-20. Next sentence. Fall in food inflation. Fall in food inflation has been a major contributing factor. In the drastic reduction observed in inflation. Between 2014-15 and 18-19. 2014-15 and 2018-19. मतलब फूड इन्फ्लेशन का जो फॉल है वो मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जिसकी वजह से ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट हैज रिड्यूस्ड. नेक्स्ट, there is convergence of headline inflation towards core inflation convergence of headline inflation towards
core inflation from 2012 onwards. 2012 onwards, as per CPI combined, as per CPIC or CPI combined. नेक्स्ट लाइन, ठीक है, इसको अलग अलग सेंटेंस में लिखते रहें. हेडलाइन इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन सीपीआई कंबाइंड. हेडलाइन इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन सीपीआई कंबाइंड has been sliding on a downward path, has been sliding on a downward path since 2014. Next, the average CPIC headline, the average CPI combined headline inflation, which was 5.9% in 2014-15, 5.9% in 2014-15, has reduced to 3.4% in 2018-19. This has been led by drastic fall in food inflation. Drastic fall in food inflation from 6.4% in 2014-15 to 0.1% in 2018-19. So this fall in CPI combined is mainly because of fall in food inflation. फैक्ट के साथ साथ वो डायरेक्शन रखना. नेक्स्ट पैराग्राफ. In 2019-20, current year के लिए, in 2019-20 there has been slight upward trend. There has been slight upward trend in headline and food inflation number. In headline and food inflation number. In December 2019, CPI combined, CPIC, ये headline inflation है, CPIC was at 7.4%, while CPI food inflation increased to 14.1%, mainly driven by a rise in vegetable prices. Also, next sentence, the core inflation has also increased to
3.8%. 3.8% in December 2019. In December 2019. Next, during 2019-20, WPI based inflation, WPI based inflation, WPI based inflation has been on a continuous fall, has been on a continuous fall, declining from 3.2% in April 2019, 3.2% in April 2019 to 0.6% in November 2019. 3.2 to 0.6 in November 2019, but increased to 2.6%, increased to 2.6% in December 2019. Next, since July 2018, CPI urban inflation, has been consistently above, CPI rural inflation. Underline that. CPI urban inflation has been consistently above CPI rural inflation. This is since July 2018. This is in contrast to earlier experience. This is in contrast to earlier experience. This is in contrast to earlier experience, where rural inflation has been mostly higher than urban inflation. Rural inflation has been mostly higher than urban inflation. मतलब पास्ट में रूरल इन्फ्लेशन यूज्ड टू बी हायर एज कंपेयर टू urban, but since July 2018 urban inflation is more than the rural inflation. The divergence has been mainly on account of mainly on account of differential rate of food inflation. Differential rate of food inflation between rural and urban areas. So the divergence in rural urban food inflation has been mainly led by divergence in rural urban food inflation has been mainly led by cereals, eggs, fruits, vegetables. Cereals,
eggs, fruits and vegetables. ठीक है, तो पास्ट में और प्रेजेंट में अब ये डिफरेंस है. दिस इज बेसिकली दिस blue one is for rural, so it used to be higher. The rural inflation used to be higher as compared to the urban, but now urban is higher as compared to the rural, although the gap both are higher, but still the urban inflation is higher than the rural inflation. ठीक है, तो ट्रेंड मालूम होना चाहिए और ट्रेंड के डाइवर्जेंस के पीछे जो लॉजिक है वो. नेक्स्ट, और डाइवर्जेंस सिर्फ फूड इन्फ्लेशन की वजह से ही नहीं है, देयर आर अदर एस्पेक्ट एज वेल, बिकॉज जो अर्बन बास्केट होगा और जो रूरल बास्केट होगा वो डिफरेंट है. तो अर्बन बास्केट में जो गुड्स हैं उसके प्राइस ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज हो रहे हैं. नेक्स्ट, द डाइवर्जेंस इन रूरल अर्बन इन्फ्लेशन, द डाइवर्जेंस इन रूरल अर्बन इन्फ्लेशन is not just observed in food component, is not just observed in food component, but in other component also, ठीक है. आफ्टर दैट, सर्वे इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑफ इन्फ्लेशन इन स्टेट्स. सो फॉर वेरियस स्टेट्स, इन्फ्लेशन इन स्टेट्स, यू कैन मेक अ सब हेडिंग and main points. Inflation in states. First, CPI combined inflation, CPI combined inflation has continued to be highly variable, across states. So it is not uniform that in every state it is higher. CPI combined inflation has continued to be highly variable across states. It ranged between minus 0.04% to 8.1%, minus 0.0 to 8.1% across states in 2019-20. ठीक है, पास्ट में इसका जो स्प्रेड था वो -1.3 to 9.1. This was in 18-19. So across the states it is varying between that range from -1.3 to 9.1, and in the 2019-20 -0.04 to 8.1. So that is the spread in which inflation among various states are varying. Below that, however, the overall inflation rate has been quite low. Overall inflation rate has been quite low in almost all states. So in 15 states
in 15 states / union territories. In 15 states, it was below 4%. In below 4%. It was below 4% in 2019-20. In 2019-20. Out of various states, among 15 states, it was less than 4%, although the range is varying between 0.04 to 8, but among 15 union territory and states, it was less than 4%. It has been observed that inflation has actually decreased in 8 states. Inflation has actually decreased in 8 states. Inflation has actually decreased in 8 states. For 19 state and union territories. 19 state and union territories. 19 state and union territories had inflation rate lower than all India average. Lower than all India average. लोअर देन ऑल इंडिया एवरेज, मतलब 19 स्टेट्स का जो इन्फ्लेशन रेट है वो ऑल इंडिया एवरेज से कम है, विथ दमन एंड दीव हैविंग द लोएस्ट इन्फ्लेशन. दमन एंड दीव having the lowest inflation, followed by Bihar and Chhattisgarh. Followed by Bihar and Chhattisgarh. Followed by Bihar and Chhattisgarh. बट रिमेंबर लो इन्फ्लेशन दो फैक्ट को अलग अलग तरीके से रीड या इंटरप्रेट भी करते हैं. देयर कुड बी लो इन्फ्लेशन इन 2 सिचुएशन, मोर प्रोडक्शन मोर डिमांड, देन ऑल्सो इन्फ्लेशन विल बी लोअर, लेस प्रोडक्शन लेस डिमांड, देन ऑल्सो इन्फ्लेशन रेट विल बी लोअर. तो वो लो लेवल ऑफ इकोनॉमी भी हो सकता है और हाई लेवल ऑफ इकोनॉमी भी पॉसिबल है. ये स्टेट वाइज एक टेबल गिवन है, बट आई डोंट थिंक क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ है. स्टेट वाइज ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, कहाँ डिक्रीज हुआ कहाँ इंक्रीज हुआ, आपने सिर्फ नंबर ऑफ स्टेट्स लिखे हैं, वो ज़्यादा रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है. लोएस्ट के लिए ठीक है दमन एंड दीव, मतलब ये रेंज गिवन है, इट इज़ वेरिंग फ्रॉम 0.04% टू 8.1%. वन इन्फॉर्मेशन फॉर 1819 में इट वॉज वेरिंग फ्रॉम -1.14 1.3 टू 8.9.1. तो डिफरेंट स्टेट्स के लिए ये बार चार्ट गिवन है, अलग अलग स्टेट्स में कहाँ इंक्रीज हुआ कहाँ डिक्रीज हुआ है, बट स्पेसिफिक किसी स्टेट के लिए याद करने की जरूरत नहीं है. जो ब्रॉडर कंसेप्ट है वो उसके अंदर गिवन है. कितने स्टेट्स में लेस देन 4% है, 15 स्टेट्स में इन्फ्लेशन रेट वाज लेस देन 4%, 19 स्टेट्स में लेस देन द नेशनल एवरेज, एंड द लोएस्ट वाज इन दमन एंड दीव. Then one section is for drivers of inflation. So what causes mainly the inflation? What are the source? ठीक है, यहाँ भी एक टेबल ये देखिएगा.
contribution to CPI combined inflation in 1718 and 1819. What contributed to that inflation? So you are referring basically to a basket. उस बास्केट में ये अलग अलग गुड्स है, कंपोनेंट है, और उस कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन सीपीआई इन्फ्लेशन में क्या है. सो इट विल बी इंक्लूडिंग मिसलेनियस फ्यूल एंड लाइट, हाउसिंग, क्लॉथिंग एंड फुटवेयर, food and beverages. So there are various component of it. So those component are basically contributing to the inflation rate as well. Major points right now. During 2018-19, the major drivers of CPI-C inflation, the major drivers of CPI combined inflation was the miscellaneous group. However, during 2019-20, food and beverages emerged as main contributor to CPI-C inflation, main contributor to CPI combined inflation, with 54% of inflation. During this period, 54% of inflation during this period is attributable to this group. ठीक है. ड्रग्स वगैरह के प्राइस को कंट्रोल करने के लिए देयर इज अ नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स, 2011. ड्रग्स के प्राइस को कंट्रोल करने के लिए नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स. ठीक है. तो यहाँ पे जो एसेंशियल मेडिसिन है उसके प्राइस पे एक कैप है, मतलब इट कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट. फिक्सेशन ऑफ सीलिंग प्राइस. सीलिंग इज लीगल मैक्सिमम. फिक्सेशन ऑफ सीलिंग प्राइस और मैक्सिमम रिटेल प्राइस. ठीक है. आफ्टर दैट देन इट गोज ऑन टू बेसिकली डिस्कस अबाउट वेरियस कमोडिटीज. बट कमोडिटीज के लिए आपको ज़्यादा मतलब स्टेट वाइज और मेट्रोपॉलिटन सिटीज वाइज इंफॉर्मेशन गिवन है. तो फूड इन्फ्लेशन में लाइक वन सेक्शन इज फॉर ऑनियन, देन टोमेटो, पल्सेस एंड सो ऑन. तो जनरल ट्रेंड में आपको मालूम है वो टोमेटो का प्राइस और ऑनियन का प्राइस हायर है, पल्सेस स्टिल हायर. सो इंफॉर्मेशन यहाँ पे अलग अलग ट्रेंड के फॉर्म में गिवन है, वो आई थिंक ज़्यादा रेलिवेंट सेक्शन नहीं है. लाइक दिस टाइप ऑफ टेबल, इसको आप इग्नोर कर देना. ठीक है. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में ग्राम का प्राइस, फिर ग्राउंड नट के लिए, फिर ऑनियन होलसेल प्राइस, टोमेटो होलसेल प्राइस. ठीक है. ये आई विल से इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन आपके पेपर के लिए, एग्जामिनेशन के लिए होगा. ठीक है. यू कैन इग्नोर दोज इन्फॉर्मेशन.
ठीक है, तो मेजर्स वगैरह में एक्चुअल में मेजर्स के अंदर आप इस फॉर्म के लास्ट में एक मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन राइज फॉर एसेंशियल कमोडिटीज भी है, यू कैन ऐड इनटू दैट पॉइंट measures to control price rise, measures to control price rise. Government has taken various measures. Government has taken various measures to stabilize prices of essential food items. To stabilize prices of essential food items. Which include utilizing trade and fiscal policy instrument, like import duty, minimum export price, comma export restriction, comma imposition of stock limits, comma incentivizing farmers by announcing MSP, and implementing schemes like Mission for Integrated Development of Horticulture, MIDH, Mission for Integrated Development of Horticulture, then National Food Security Mission, NFSM, National Food Security Mission, then National Mission on Oilseeds, and oil palm. National Mission on Oilseeds and oil palm. Next, during 2019-20, buffer stock of onion was created. Under price stabilization fund. Price stabilization fund. And benefits to exporters of onion. Benefits to exporters of onion under merchandise export from India scheme. ठीक है, और ऑनियन के लिए
MMTC has basically, through MMTC we imported onion from recently from Turkey and Egypt. We imported onion from Turkey and Egypt for controlling the prices of onion. ठीक है, तो up to this was information in that price and inflation chapter number 5. Now move to the sector wide description. Sector wide description is mainly for industry, and infrastructure is one chapter and service sector is another chapter. So next is chapter number 8 first. Chapter number 8 is industry and infrastructure. Industry and infrastructure. This is chapter number 8. ठीक है, फर्स्ट ड्रॉ दिस टेबल नंबर 1 डेटा के लिए. Share in gross value added. Share in gross value added for industry. Share in gross value added for industry. ठीक है, this is 29.6. ये 29.6 शेयर है इन जीडीपी ग्रॉस वैल्यू एडेड में. ठीक है, 57 पॉइंट अराउंड इज शेयर ऑफ सर्विसेज, रेस्ट इज ऑफ एग्रीकल्चर. 29.6. एंड इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ रेट, this is basically for the share, and in terms of growth rate of industry, if we write for 17, 18, 19 and 19, 20, 5.9, 6.9, 2.7 and 0.5 ये क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 के लिए 1920 का, क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 2. और 1920 का जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट है, मतलब फर्स्ट हाफ के लिए इट वाज 2.5 इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट. 2.5 first advance estimate. I am referring to this table. ठीक है, this is share in GDP, gross value added. Then rest are information about the growth rate of this and industry. So 5.9, 6.9, 2.7, 0.5, this is quarter 1, quarter 2, and 2.5 is the first advance estimate of 2019 and 20. ठीक है, तो यू कैन से करंटली द ग्रोथ रेट. अगर रिसेंट पास्ट के अंदर आप ग्रोथ रेट कहेंगे इंडस्ट्री का, तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल स्लो डाउन इज रिफ्लेक्टेड इन दैट डेटा. सो द ग्रोथ रेट वाज 5.9, 6.9 and then reduced to 2.7, 0.5 and 2.5. and out of this industrial weightage, मैन्युफैक्चरिंग का वेटेज 6.4 है. मैनिंग एंड क्वायरिंग इज 2.4, इलेक्ट्रिसिटी गैस 2.8, कंस्ट्रक्शन ऑफ 8. ठीक है, शेयर इन ग्रॉस वैल्यू एडेड. तो इन केस आपने अगर ये एग्रीगेट याद रखा है ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए, बट दैट इंडस्ट्री हैज़ वेरियस कंपोनेंट. कंस्ट्रक्शन सेक्टर 8, इलेक्ट्रिसिटी सेक्शन
8 एंड मैन्युफैक्चरिंग इज, और जिसका वेटेज ज़्यादा हो उस वेटेज वाले सेक्टर का ग्रोथ रेट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, जिसका वेटेज ज़्यादा है उसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा ग्रोथ रेट को, तो जिसका वेटेज ज़्यादा है वो मैन्युफैक्चरिंग है, और मैन्युफैक्चरिंग में Q2 का ग्रोथ रेट -1%. So that slowdown is basically due to manufacturing slowdown. It is manufacturing sector which is dragging the overall industrial sector contribution. ठीक है, रेलिवेंट टेबल है ये, टेबल नंबर 1. Below that table जो second table है on the same page, that shows a index of industrial production, IIP growth rate, index of industrial production. Now index of industrial production, this is overall general index, and sector wise composition, sector wise का composition given है 18-19 के लिए और 19-20 के लिए. इसमें मेन फैक्टर जहाँ पे अपने वो पेपर 2 की क्लास के अंदर भी लिखा हुआ है, वन इम्पॉर्टेंट वेरिएबल इज हियर, -11.6 इज कैपिटल गुड, -6.5 इज कंज्यूमर ड्यूरेबल. लाइक क्वेश्चन का अगर रहता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्लो डाउन है, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गया वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आ जाएंगे वहाँ पे. उनका ग्रोथ रेट -6.5% है. मतलब बहुत सारे टेबल आपको रीइंफोर्स करेंगे. अगर आप यहाँ ग्रोथ रेट देखोगे और बैंकिंग वाले सेक्टर में क्रेडिट टू दैट सेक्टर, तो क्रेडिट टू दैट सेक्टर विल ऑल्सो बी लोअर बिकॉज द ग्रोथ रेट इटसेल्फ इज लोअर. ऑल्दो वी कैन फाइंड अ हाई ग्रोथ इन विच सेक्टर, 12.2 in intermediate goods, 12.2 in intermediate goods. This is a sector wise composition. Manufacturing growth rate 0.9, electricity 0.8, ऊपर लिखा था वो वेटेज था और यहाँ उसका ग्रोथ रेट हो गया. ठीक है, कुछ मेजर इंफॉर्मेशन लिखिएगा. राइट सर. Industrial sector based on the industrial sector based on IIP, the industrial sector based on IIP, industrial sector based on IIP registered a growth of 0.6% in 2019-20. 0.6% ये नंबर है, 0.6% in 2019-20. as compared to 5%, as compared to 5% in 2018-19. ठीक है, फ्रॉम दिस नंबर 5 to 0.6 IIP ग्रोथ रेट. नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर is 0.9%, 0.9% in 2019-20, 0.9% in 2019-20 as compared to 4.9, as compared to 4.9 during 2018-19 मैन्युफैक्चरिंग के लिए. दिस थर्ड वैल्यू 0.9 and 4.9, मैन्युफैक्चरिंग 4.9 to 0.9. इट इज़ नॉट फिजिबल फॉर यू टू रिमेंबर ऑल द फैक्ट, बट जो मेजर फैक्ट है वो उसको लिखेगा, जो मेजर कंट्रीब्यूटर होंगे एटलीस्ट वो अगर याद होगा तो ऑप्शन एटलीस्ट यू कैन हेल्प. ठीक है, 2-4 अगर फैक्ट अगर आपको मेजर वन याद है तो फिर ऑप्शन से निकल जाता है.
नेक्स्ट पैराग्राफ लिखना, द मॉडरेशन इन ग्रोथ इज, ये मैन्युफैक्चरिंग का आईआईपी में ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग का तो माइनस में था ना 18-19 में, ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ वो ऊपर माइनस 6.9 है, ऊपर वाले में इंफॉर्मेशन 19-20 के लिए गिवन है, Q1 Q2 के लिए, और 18-19 का जो प्रोविजनल एस्टिमेट है इट वाज 6.9 मैन्युफैक्चरिंग के लिए, 17-18 का 5.9। ठीक है, तो अलग अलग एस्टिमेट आपको इसलिए भी मिल जाता है बिकॉज एक आपका एडवांस एस्टिमेट होता है, उसके बाद उसका रिवाइज एस्टिमेट आ जाता है, और एक उसका फाइनल एस्टिमेट आ जाता है। The moderation in growth, और दूसरा गैप जो डिफरेंस आता है उसके पीछे एक रीजन ये भी होता है, जब आप एक पीरियड के ग्रोथ को लेटेस्ट, हमने लेटेस्ट जो डेटा हो गया वो अप्रैल टू नवंबर का हो गया, तो अप्रैल टू नवंबर के ग्रोथ रेट को कंपेयर करने के लिए हम अप्रैल टू मार्च तक का ग्रोथ नहीं ले रहे, हमने उस पीरियड में भी क्या लिया, उसका सेम फेज का ग्रोथ लिया है, और ऊपर वाले इंफॉर्मेशन वो कंप्लीट ईयर का भी ग्रोथ होगा। ठीक है, बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं होता बट इट कुड बी, अगर आपको डिफरेंस दिख रहा है तो वो डिफरेंस, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन किस पीरियड का है वो इंपॉर्टेंट है, इट इज़ फॉर अप्रैल टू नवंबर और फॉर अप्रैल टू मार्च। द मॉडरेशन इन ग्रोथ इज मेनली अराइजिंग फ्रॉम, moderation in growth is mainly arising from subdued manufacturing activities, mainly arising from subdued manufacturing activities due to slower credit flow, slower credit flow to medium and small industries, slower credit flow to medium and small industries, comma, reduced lending by NBFCs, ये पॉइंट आपने मॉनेटरी मैनेजमेंट में लिखा हुआ है पहले, slower credit flow to medium and small industries, reduced lending by NBFC, and lower demand for key sectors, such as automobile sector, machinery and equipment, and volatility in international crude prices, volatility or fluctuation in international crude prices and the prevailing trade related uncertainty, ठीक है, तो certain reasons for slowdown has been pointed out. Next, as per used based classification, use based classification of IIP, growth of capital goods and consumer durables, declined by 11.6%,
11.6% and 6.5% respectively. 11.6% and 6.5% respectively during the current financial year. During the current financial year. ठीक है, तो दो की एरिया याद रखेंगे, कैपिटल गुड्स के लिए और कंज्यूमर गुड्स के लिए. नेक्स्ट सेंटेंस, द ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, द ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर स्लैश कंस्ट्रक्शन गुड, द ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर स्लैश कंस्ट्रक्शन गुड declined by 2.7%, declined by 2.7% in the current financial year. Current financial year. Next, however, intermediate good, consumer non-durable and primary goods, intermediate good, consumer non-durable and primary goods registered intermediate good, consumer non-durable good and primary good registered growth of 12.2%, 12.2%, 3.9% and 0.1% respectively. 12.2%, 3.9% and 0.1% respectively. सिग्निफिकेंट को सिर्फ अंडरलाइन करके रखेंगे दैट इंटरमीडिएट गुड का ग्रोथ 12.2 है, बट कैपिटल गुड्स का मतलब मशीनरी और इक्विपमेंट का ग्रोथ रेट -11 पॉइंट एंड देन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैज स्लो डाउन, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल हैज इंक्रीज्ड. Then 8 core industries. 8 core industries. The index of 8 core industries. 8 core industries में एक्चुअल में इंक्लूड क्या हो रहा है? कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, ऑल्दो क्वेश्चन नहीं बनना है बट स्टिल मे बी विच वन इज नॉट इंक्लूडेड. आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है बट विच वन इज नॉट पार्ट ऑफ दैट कोर. सो जस्ट राइट डाउन 8 कोर इंडस्ट्रीज: कोल, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, fertilizers, steel, cement and electricity. I repeat: coal, crude oil, natural gas, refinery product, fertilizer, steel, cement and electricity. These industries comprise 40.27% weightage, 40.2% weightage in the index of IIP, मतलब जो ओवरऑल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसमें इस 8 कोर इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन 40.27. सो देयर ग्रोथ विल बी बेसिकली डिटरमाइनिंग द ग्रोथ रेट ऑफ ओवरऑल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एज वेल. नेक्स्ट, द ग्रोथ ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, the growth of 8 core industries stood flat
stood flat during the current financial year. Stood flat during the current financial year. Full stop. During the corresponding period of previous year. During the corresponding year of previous period. These industries, during the corresponding period of previous year, these industries grew at 5.1%. At 5.1%. 5.1%. 5.1%. ठीक है, टेबल इज इनफैक्ट ये इंफॉर्मेशन यहाँ से ग्राफिकल फॉर्म में शो है। ग्राफ को रीड करना उतना इजी नहीं हो आपके लिए। जो इन्फॉर्मेशन सेंटेंस में पैराग्राफ में गिवन है वो ज़्यादा रेलिवेंट है, वहाँ अंडरलाइन करके रख लीजिए। ये रीड करने के लिए ऑब्वियसली यू हैव टू वेरी अटेंटिव। मतलब ये इंफॉर्मेशन फर्स्ट ऑफ ऑल 8 कोर इंडस्ट्रीज के लिए ये ब्लू लाइन, ठीक है। तो ग्रोथ ऑफ अराउंड हायर ग्रोथ, देन ये मंथ वाइज इंफॉर्मेशन गिवन है, एंड दिस लाइन इज इन फैक्ट 0, lower than that number is in fact all negative. So this is in the negative territory. Manufacturing is in the negative territory, marginally positive, and IIP overall is above that 0 line, ठीक है। तो ये 3 फॉर्म इंफॉर्मेशन गिवन है 17, 18 और 19, 20 का कंपैरिजन, ठीक है। मोरलेस सेक्शन क्लियर है, इंडस्ट्रियल का शेयर क्लियर है, उसका ग्रोथ रेट क्लियर है, उसके जो कंपोनेंट है उसमें लार्जेस्ट डिक्लाइन और लार्जेस्ट इंक्रीज वाला पॉइंट क्लियर है, और 8 कोर इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन याद है। नाउ मूव टू द पब्लिक सेक्टर परफॉर्मेंस इन द सेम इंडस्ट्रीज। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ठीक है। राइट ऑन। देयर आर 348 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, 348 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज as on 31st March 2019, as on 31st March 2019। इस 348 में 249 are in operation, so they are functional। 249 are in operation, 86 are yet to start commercial operation। 249 are in operation, 86 are yet to start commercial operation, 13 are under closure or liquidation, 13 are under closure or liquidation, 13 are under closure or liquidation। So basically running enterprises are 249, although number technically it is 348। below that, out of 249 operating, out of 249 operating, out of 249 operating enterprise, as many as 178, as many as 178 showed profit, 178 showed profit during 2018-19, 178 shows profit 2018-19, and 70 incurred loss, 70 incurred loss, 70 incurred loss, and one
has shown neither profit nor loss, and one has shown neither profit nor loss. ठीक है, नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज क्लियर है, 249 रनिंग आउट ऑफ 348 एंड 178। ये ऐसे इन्फॉर्मेशन आप जब पब्लिक सेक्टर का क्वेश्चन आप ऑप्शनल के अंदर भी लिख रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आप यूज़ करो वहाँ पे। तो करंट इन्फॉर्मेशन के मतलब उस पब्लिक सेक्टर को जब इवेलुएट कर रहे हैं तो इवेलुएट करते समय ये लिख सकते हैं कि आउट ऑफ 249 70 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज आर रनिंग इनटू लॉसेस, और उस कंटेक्स्ट में डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी को भी एग्जामिन करते हैं। It is not that disinvestment of all public sector enterprise, disinvestment of certain public sector enterprise. So 70 public sector enterprises are running into losses. That is a huge number, and their losses are basically accumulating to the government expenditure. So those public sector units can be disinvested. Next information, growth in gross bank credit flow. Next information, growth in gross bank credit flow, growth in gross bank credit flow to industrial sector, bank credit flow to industrial sector, bank credit flow to industrial sector increased to 2.7%, increased to 2.7% in September 2019 as compared to 2.3% in September 2018. ठीक है, ये ईयर टू ईयर बेसिस पे ग्रोथ। तो सब क्रेडिट फ्लो टू इंडस्ट्रीज लाइक, क्रेडिट फ्लो टू इंडस्ट्रीज लाइक, क्रेडिट फ्लो टू इंडस्ट्रीज लाइक वुड एंड वुड प्रोडक्ट, वुड एंड वुड प्रोडक्ट, कॉमा इंजीनियरिंग गुड्स, इंजीनियरिंग गुड्स, सीमेंट, comma construction and infrastructure, construction and infrastructure, construction and infrastructure increased in September 2019, in September 2019 as compared to September 2018, as compared to September 2018. While credit flow contracted, reduced, while credit flow contracted, जो पहले लिखा था उसमें क्रेडिट का फ्लो इंक्रीज हो रहा है, अब जो लिख रहे हैं वहाँ क्रेडिट का फ्लो रिड्यूस हो रहा है। द क्रेडिट फ्लो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर माइनिंग एंड क्वेरिंग, टेक्सटाइल, कोल प्रोडक्ट, पेट्रोलियम, बेसिक मेटल एंड मेटल प्रोडक्ट्स, बेसिक मेटल एंड मेटल प्रोडक्ट्स, बेसिक मेटल एंड मेटल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो जिस सेक्टर के लिए इंक्रीज हो रहा है क्रेडिट फ्लो वो क्लियर होगा, जिसके लिए डिक्रीज हो रहा है वो
Then in this industry, it is giving information of ease of doing business, and the ranking is 63. Ranking is 63, and this is published by World Bank. Ease of doing business. ठीक है, और इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इनफैक्ट 10 इंडिकेटर्स दिए जाते हैं. They consider in fact 10 indicators. और 10 इंडिकेटर में इन 7 इंडिकेटर इंडिया हैज़ इम्प्रूव्ड द परफॉर्मेंस. इंडिया की रैंकिंग आउट ऑफ 10 7 इंडिकेटर में इंक्रीज हो रही है. 7 इंडिकेटर में इंक्रीज हुआ है. And some prominent one are these. India's progress in ease of doing business report ranking 18 and for 19. Red one is for 19. So starting a business 137 to 136. Dealing with a construction permit, getting electricity, registering property, paying taxes, trading across border, and resolving insolvency. Some prominent one are given. ठीक है, starting a business 137 to 136. This is 52 to 27 improvement. Ranking है तो लोअर नंबर हायर बार होगा वो. मतलब कुछ एग्जाम्पल याद रखिए. जो 10 इंडिकेटर लिखे हैं, ऑल 10 का लिस्ट नहीं है, बट सम इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स. मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज डिटरमाइंड बाय, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज बेसिकली डिटरमाइंड बाय द इंडिकेटर ऑफ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज मेनली डिटरमाइंड बाय द इंडिकेटर ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस, डीलिंग विद द कंस्ट्रक्शन परमिट, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, पेइंग टैक्सेस, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर एंड रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी. ठीक है, तो रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी 108 to 52, यू कैन से द आउटकम ऑफ IBC, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड. तो जो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस होंगे, मैकेनिज्म होंगे, वो रिफ्लेक्ट होगा ऐसे इंडेक्स के अंदर. ठीक है, लिस्ट में कुछ एग्जाम्पल जैसे गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स है, वो इन प्रोग्राम को यहाँ लिखने की जरूरत नहीं. स्टार्टअप इंडिया इन 2015, वो बेसिक एम आपको मालूम है. देन वी कैन मूव टू द न्यू इंफॉर्मेशन सेक्शन. देन इट गोज ऑन टू एक्सप्लेन द सेक्टर वाइज इनिशिएटिव. सेक्टर वाइज, सो सम इम्पॉर्टेंट सेक्टर वाइज इशू एंड इनिशिएटिव. And among important sector is steel. So India's position in world in steel production. Second, India stood at second position in the production of crude steel. India stood at second position in the production of crude steel, and India is third largest consumer of finished steel. Third largest consumer of finished steel. Third largest consumer of finished steel after China and USA. After China and USA. So
pie chart has been given for country-wise share of crude steel production. So this is for the production overall, and lower one is for consumption. So production-wise, China contribute 53.8, and it also consumes 48.8. Largest producer as well as consumer. And India is contributing 6 and consuming 5.7. इंडिया के लिए इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है. प्रोडक्शन वाइज 6% एंड कंजम्पशन वाइज 5.7%. And China produces more as well as consumes more. But if you convert all those information, these are in fact absolute number. If you convert all these numbers in terms of per capita, तो per capita के फर्म में इंडिकेशन फर्दर चेंज हो जाएगा. But generally production wise still producing 6% and consuming 5.7% of the total. So in terms of production it is second, in terms of consumption it is third. ठीक है. ठीक है. सेक्शन में एक पार्ट है इसके अलावा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का है, वो क्लास के अंदर इंडस्ट्री में हमने कर रखा है. ठीक है. उसका डेफिनेशन कि किसे माइक्रो कहते हैं, किसे स्मॉल कहेंगे और कौन सा मीडियम है. दे आर डिफाइंड एज पर टर्नओवर. ठीक है. और टर्नओवर के अकॉर्डिंगली एंड देयर आर सर्टेन इनिशिएटिव्स. सो वी हैव ऑलरेडी डन इन दिस अर्लियर क्लास. नाउ आफ्टर दैट इज textile and apparels or clothing. ठीक है. After steel it is textile which contribute 18% of manufacturing. Textile is contributing 18% of manufacturing. 18% of manufacturing and 2% of GDP. 18% of manufacturing and 2% of GDP. 2% of GDP in 2017-18. डेटा वहाँ का है 17-18 का. 18% of manufacturing and 2% of GDP. The share of textile and clothing. The share of textile and clothing in total export was 12% in 2018-19. 12% in 2018-19. मैन्युफैक्चरिंग में 18%, जीडीपी में और एक्सपोर्ट में 12%. एंड दिस सेक्टर इज द बिगेस्ट एम्प्लॉयर आफ्टर एग्रीकल्चर. टेक्सटाइल एंड अपैरल, दिस सेक्टर इज द बिगेस्ट एम्प्लॉयर आफ्टर एग्रीकल्चर and it employs 4.5 crore people directly. It employs 4.5 crore people directly and 6 crore people in allied sector. 6 crore people in allied sector. ठीक है. टेबल इंफॉर्मेशन रखिएगा, रेलिवेंट है टेक्सटाइल के लिए. 18 इन मैन्युफैक्चरिंग, 2% जीडीपी, 12% इन एक्सपोर्ट. देन मूव टू द इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट.
in infrastructure infrastructure ठीक है, there is a national infrastructure pipeline for 2020 to 25 20 to 25 below that information added to draw up the national infrastructure pipeline for each year. To draw up national infrastructure pipeline, to draw up the national infrastructure pipeline for each year, an interministerial task force for each year, an interministerial task force was set up in September 2019 under the chairmanship of secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance. Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance. Next line. NIP, that is National Infrastructure Pipeline. NIP is expected to enable well prepared infrastructure project which will create job improve ease of living and provide equitable access to infrastructure for all and thereby making growth more inclusive. So it also intends to facilitate supply side intervention in infrastructure to boost short term as well as potential GDP growth.
full stop. It will also improve infrastructure capacity. It will also improve infrastructure capacity and make Indian economy more competitive. ठीक है, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट 39, स्टेट गवर्नमेंट 39 एंड 22 प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है. नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 39%, सेंटर्स 39%, स्टेट गवर्नमेंट एंड 22% प्राइवेट सेक्टर. तो क्वेश्चन का नेचर इट कुड बी दैट 3-4 इंफॉर्मेशंस रिलेटेड टू national infrastructure pipeline has been given and based upon that there will be some options. और in general अगर आप ऑप्शन में इसको यूज़ कर रहे हैं तो एज अ गवर्नमेंट पॉलिसी यूज़ करेंगे that government has implemented national infrastructure pipeline and the main objective जो उससे पहले वाले पैराग्राफ में लिखा है and how it can be done, वो ये फॉर्म लिख लें. ठीक है, फर्दर डिटेल जो मेन वन है वो आपने लिख रहा है. नाउ सेक्टर वाइज डिस्क्रिप्शन में इट गिव्स यू इंफॉर्मेशन अबाउट द रोड सेक्टर, देन रेलवेज, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड, रेलवे, सिविल एविएशन, ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के फॉर्म में, टेलीकम्युनिकेशन के फॉर्म में और टेलीकम्युनिकेशन कनेक्टिविटी. सो सम मेन इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस सेक्टर्स लाइक रोड, मेन इंफॉर्मेशन लिखना. The share of transport sector in gross value added, the share of transport sector in gross value added for 2017-18 was 4.77%, of which road transport is the largest. ब्रैकेट में 3.06, followed by railways 0.75 and air transport 0.15 and water transport, inland water transport 0.06. तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, ठीक है, आउट ऑफ दैट रोड 3.06, रेलवेज 0.75, एयर 0.15 एंड वाटर ट्रांसपोर्ट इज 0.06. तो ये ऑर्डरिंग क्लियर किया. In terms of railways, India is the third largest network in world under single management. Indian Railways with 68,000 route kilometer is the third largest network in the world under single management.
एक इंफॉर्मेशन ये भी रिसेंटली यूज में रहता है रोड सेक्टर वाले में, आप इस टेबल को देख सकते हैं। रोड लेंथ अवार्डेड एंड कंस्ट्रक्टेड इन टर्म्स ऑफ लेंथ इन किलोमीटर, like road construction per day. Road construction per day is 17 in 15-16, 23 in 16-17, 27, 29. So the speed at which road are constructed is increasing. So 17, 23, 27, 29 और 19, 20 का इंफॉर्मेशन एज ऑन मार्च 19 गिवन है 12.7। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन रेलिवेंट होता है। रोड कंस्ट्रक्शन पर डे, सो जस्ट हैव सम आइडिया। रोड कंस्ट्रक्शन पर डे वाज 18-19 के लिए इंफॉर्मेशन 29.65 कंप्लीट ईयर के लिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल हाईवे एज अ परसेंटेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल हाईवे एंड रोड्स, वो इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है। हाउ मेनी किलोमीटर्स ऑफ रोड कंस्ट्रक्टेड पर डे। ठीक है, रिमेंबर दिस। Clear? Then during regarding rail safety, it gives you information of type of accident: collision, derailment, man level crossing accident. So just remember the highest one is basically for due to derailment, and that indicate what? मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक। ठीक है, डिरेलमेंट मेनली उसकी वजह से होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट में बेसिकली ट्रैक मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। (46) was derailment, number of derailment in that year 2018-19। ठीक है, in terms of civil aviation, India is, in terms of civil aviation, India is third largest domestic market in the world. Third largest domestic market in the world. And it has 136 commercially managed airports. 136 commercially managed airports by Airport Authority of India. 136 commercially managed airports by Airport Authority of India Limited. Airport Authority of India. And 6 under public private partnership, and 6 under PPP, public private partnership. ठीक है, रिगार्डिंग पोर्ट सेक्टर, पोर्ट्स, regarding ports, read one information which is important is the average turnaround time. The average turnaround time regarding port, the average turnaround time. Turnaround time means for shipping that product and returning back to the origin. The average turnaround time in 2018-19 improved to
59.51 hour, 59.51 hour as against 64.43 hour, as against 64.43 hour in 2017-18, in 2017-18. ठीक है, so one information which is relevant for the port sector. Next is the total telephone connection in India. Total telephone connection in India increased by 18.8%, increased by 18.8%, increased by 18.8%, and internet and broadband penetration, internet and broadband penetration has kept a rapid pace. Internet and broadband penetration has kept a rapid pace, has kept a rapid pace. Next is petroleum and natural gas. Petroleum and natural gas. Petroleum and natural gas. Within that, India is third largest energy consumer. India is third largest energy consumer. Third largest energy consumer after USA and China. After USA and China, with a share of 5.8%, with a share of 5.8% of 5.8% of world's primary energy consumption. World's primary energy consumption. So India's energy requirement is fulfilled by, India's energy requirement are fulfilled by, energy requirement are fulfilled by coal, crude oil, renewable energy, crude oil, renewable energy, and natural gas. And natural gas. Or in terms of power, take in terms of power, there is an information of that India's ranking has improved its ranking to 76th in terms of energy transmission index. Energy transmission index. Energy transmission index published by World Economic Forum. Published by World Economic Forum. World Economic Forum. Power में you can remember this. Sources, in fact, fuel wise. So thermal is contributing 62.9. Thermal is contributing 62.9. ठीक है, 62.9 आप कोल वाइज और पावर का जो कंपोजिशन है वो लिख सकते हो. थर्मल कंट्रीब्यूटिंग 62.9, देन हाइड्रो 12.4, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज 22.8.
8 and nuclear 1.9. Thermal 62.9. So major source of power. Hydro is 12.4. Renewable energy source. रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, तो रिन्यूएबल एनर्जी में कौन कौन से आ जाएंगे? सोलर हो गया, विंड एनर्जी होगी. सो दोज आर कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 22.8 एंड न्यूक्लियर इज, सो वास्ट स्कोप फॉर न्यूक्लियर एनर्जी. ठीक है, ऑर्डरिंग क्या रखिएगा, किस ऑर्डर में है? हाईएस्ट, आफ्टर दैट दिस इज रिन्यूएबल एनर्जी सेकंड एंड थर्ड इज हाइड्रो. बट अगर रिन्यूएबल का ब्रेकअप कर लेंगे, उसमें सेपरेट कर लोगे, तो फिर हाइड्रो सेकंड पे आ जाएगा. एंड लास्टली टॉक्स अबाउट हाउसिंग एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर. तो उसमें कोई मेजर इन्फॉर्मेशन नहीं है. PMAY, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के बारे में इंफॉर्मेशन है. हाउ मेनी कंस्ट्रक्शन एंड सो ऑन, नॉट दैट मच रेलिवेंट, बट हाउ मच इज अर्बनाइजेशन एज पर 2021 सेंसस. अर्बन एरिया, अर्बन रूरल डिवाइड, 31% ऑफ टोटल पॉपुलेशन. ठीक है, 31% ऑफ टोटल पॉपुलेशन रिसाइड्स इन अर्बन एरियाज. (31% of total population), and there is a projection that it is expected to reach 60.6 crore, not percent, 60.6 crore by 2030. Current is 37.7. मतलब in terms of urbanization, you can say 37.7 crore. ठीक है, ये पॉपुलेशन हो गया. एंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इट इज 31% इन अर्बन एरियाज, and it is expected to reach 60.6 crore by 2030. ठीक है. So these were information in that infrastructure and industrial sector. फैक्ट को बार बार रिपीट करके रखिएगा. सो नाउ वी हैव डन आउट ऑफ 10 चैप्टर्स, मेजर चैप्टर अब ऑलमोस्ट वी हैव डन. सो द रिमेनिंग चैप्टर्स आर, one is the social infrastructure, other is agriculture and sustainable development and climate change. ठीक है. सर्विस सेक्टर में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है. तो सर्विस सेक्टर के कुछ पार्ट आपने सर्विस सेक्टर वाली क्लास के अंदर भी लिखा हुआ है. सो सर्विस सेक्टर, सो रेस्ट आई थिंक वी कैन कवर. स्लाइडली अगर एक्सटेंड होगा तो भी एक्सटेंड करके एक क्लास के अंदर ओवर कर लेंगे 5th क्लास में. ठीक है, तो ये 4th क्लास थी, अब एक क्लास के अंदर ये कवर हो जाएगा इनफ. तो विल हैव 1 क्लास ऑन वेडनेसडे. थोड़ी एक्सटेंड की जरूरत पड़ेगी तो एक्सटेंड करके उस दिन ख़त्म कर लेंगे. सो रिमेनिंग चैप्टर्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, सर्विस एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है. चलो, थैंक यू.
सर, इमेज